Hello friends, welcome to Bankers Platform. So friends, today this is the fourth part of the export of goods, the video series which we are doing on master direction on exports of goods and services by RBI. So this is the fourth video and already we have discussed 23 pages of this circular. So today we'll discuss where we left in the last video. So last video we have done up to here export of services and all. So today we'll discuss the next point, that is short shipment and shutout shipment. So what is short shipment? When part of a shipment covered by an EDF already filed with customs is short shipped. The exporter must give notice of short shipment to customs in the form and manner prescribed. So फिर जब भी कभी like some company they have filed the EDF. So they have filed the EDF, shipping bill is generated, but when they're going to do the shipment, so that time the shipment is done short. So that is called short shipment. So in that case, they have to give the notice to the custom. And in case of delay in obtaining certified short shipment notice from custom, the exporter should give an undertaking to AD Bank to effect that he has filed the short shipment notice. Okay. Next is shutout shipment, where shipment has been entirely shut out and there is delay in making arrangements to reship. The exporter will give notice in duplicate to custom in the form and manner prescribed. Okay, so this is short shipment and shutout shipment. So next is consolidation of air cargo or sea cargo. So where air cargo is shipped under consolidation, the airline company master airway bill will be issued. तो जब भी फ्रेंड्स कोई एक्सपोर्ट कर रहा है अगर थ्रू एयर तो वहां पे क्या है कि लाइक सपोज somebody is sending something so that single goods will not be taken by the airline. Okay, so there will be multiple shipment will be there. So what the airline company will do, they will issue the master airway bill and to the consolidation cargo agent, and the cargo agent in turns will issue his own house airway bill. तो जो इंडिविजुअल शिपर्स हैं, जो इंडिविजुअल एक्सपोर्टर्स हैं, उन्हें हाउस एयरवे बिल दे दिया जाएगा, बट दिस ऑल विल बी gone under a master airway bill. Okay, so this you have to remember that suppose master airway bill is there. So in master airway bill, there will be multiples of house airway bill. Okay, this house airway bill will be multiple. So master airway bill will be one. Okay, next is consolidation of sea cargo. Sea cargo also same thing. AD category bank may accept forwarded cargo receipt issued by IATA approved agent in lieu of bill of lading for negotiation or collection of shipping document. So sometimes in this sea cargo also there can be consolidation because sometimes somebody is importing through courier service. In courier service they will not be issuing the separate bill of lading. So what they will do, that shipping company will issue one single bill of lading. Okay, single bill of lading will be there. In that, all the different type of products and courier details will be given. So in that, we have to see where the product is available, which the bank has to see. So in that multiple like 5 to 10 different product guide details will be given. So in that we can check. In that, that is also a type of this forward cargo receipt. Okay. So this will be taken in respect of export transactions backed by LC if the relative letter of credit specifically provides for negotiation of this document in lieu of bill of lading, even if the relative sale contract with the overseas buyer does not provide for acceptance of FCR as a shipping document in lieu of बिल ऑफ लेडिंग, अगर उस एलसी में नहीं भी लिखा है तब भी हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ओके. फर्दर ऑथराइज्ड डीलर में एट their discretion also accept FCR issued by shipping company of repute IATA approved agents for purchase discount collection of shipping document even in cases where export transactions are not backed by LC. Okay. So next is exemption from
De- Declaration. The requirement of declaration of export of goods and software in the prescribed form will not apply to the cases indicated in Regulation 4. तो कुछ ऐसे केसेस है जहां पे जो है ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि कस्टमर को ईडीएफ फॉर्म डिक्लेयर करना है. ओके. सो द एक्सपोर्टर शेल हाउएवर बी लायबल टू रियलाइज एंड रिपैट्रिएट एक्सपोर्ट प्रोसीड एज पर फेमा रेगुलेशन. उसे डिक्लेयर नहीं करना है, बट ही हैज टू रियलाइज द पेमेंट एंड रिपैट्रिएट द एक्सपोर्ट प्रोसीड्स. Okay. So part C, obligation of authorized dealer. So first is grant of EDF waiver. So AD category bank may consider request for grant of EDF waiver for exporter as under. तो जो भी एडी बैंक्स हैं वो एक वेवर दे सकते हैं अपने एक्सपोर्टर को एज पर द फॉलोइंग गाइडलाइन. ओके. सो स्टेटस होल्डर शेल बी एंटाइटल्ड टू एक्सपोर्ट फ्रीली एक्सपोर्टेबल आइटम excluding gems and jewelry articles of gold and precious metal on free of cost basis for export promotion subject to annual limits as below. तो फ्रेंड जैसे कि हम सैंपल प्रोडक्ट्स देते हैं, लाइक कंपनीज जो है वो पहले फ्री में प्रोडक्ट्स देती हैं, उसी तरह जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं वो भी अपने इंपोर्टर जो फॉरेन में है उसे फ्री प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराना चाहते हैं, तो उस केस में उन्हें ईडीएफ वेवर के लिए ग्रांट लेना होगा अपने बैंक से. ओके. और वहां पे क्या गाइडलाइंस हमें देखनी है बैंक में. दैट आर फर्स्ट इज एनुअल लिमिट ऑफ 2% ऑफ एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट रियलाइजेशन ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 licensing years फॉर ऑल एक्सपोर्टर्स. ओके. तो ये चीज हमें देखना है कि वो 2% ऑफ एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट का रियलाइजेशन का होना चाहिए. ओके. उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. And it will be excluding the export following sector: gems and jewelry sector, articles of gold and precious metal. Annual limit of rupee 1 crore और 2% of average annual export realization. So इन दोनों का जो है या तो वो एनुअल लिमिट है, या तो 1 करोड़ है, या 2% ऑफ एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट रियलाइजेशन ड्यूरिंग 3 licensing years. So this you have to remember. From here one question can be asked. Okay. In case of supplies of pharmaceutical products, vaccine and life saving drugs to health programs of international agencies such as UN, WHO and government health programs, the annual limit shall be up to 8%. तो इन केसेस में, मेडिसिन की केसेस में, ये 8% है ऑफ द एज average annual export realization during preceding 3 licensing year. Okay. Such free of cost supply shall not be entitled to duty drawback और any other export incentive. तो इनमें कोई भी ड्यूटी ड्रॉबैक या कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा. ओके. एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स नॉट इन्वॉल्विंग एनी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिक्वायर द वेवर ऑफ ईडीएफ. और इसमें जो है कोई भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा एक्सपोर्टर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट एज ए सैंपल सेंड कर रहा है, तो इसमें उसे कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं होनी चाहिए. दिस विल बी द criteria. Okay. Receipt of advance against export. So in terms of Regulation 15, where an exporter receive advance with or without interest from a buyer outside India, the exporter shall be under an obligation to ensure that the shipment of goods made within 1 year. तो 1 ईयर के अंदर जो है उसे शिपमेंट करना है. लाइक किसी भी एक्सपोर्टर ने एडवांस पेमेंट रिसीव कर लिया है, तो उसे 1 ईयर में शिपमेंट करना ही करना है. ओके. द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ एनी payable on advance payment does not exceed London Interbank offered rate LIBOR और एनी अदर वाइडली एक्सेप्टेड और अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट. तो अब हम फ्रेंड्स लाइबॉर तो हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो वी हैव टू सी अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट प्लस 100 basis point. ओके. द डॉक्यूमेंट कवरिंग द शिपमेंट आर रूटेड थ्रू द एडी कैटेगरी वन बैंक थ्रू whom the advance payment is received. So this is for advance payment. So friends, so many things are mentioned here. If you are interested to read, you can go through full circular. But in this video, we will be discussing uh, main points which are important. Okay. So like here, like advance payment is received. So that customer, that exporter has to do the shipment within 1 year from the date of एडवांस पेमेंट. ओके. एंड आफ्टर दैट एडीपीएमएस विल कैप्चर द डिटेल्स ऑफ एडवांस पेमेंट. तो जो भी एडवांस पेमेंट हम रिसीव करते हैं बैंक्स में, उस डाटा को हमें ईडीपीएमएस में रिपोर्ट करना है. और उसके बाद जो एडी कैटेगरी वन है, दे हैव टू रिपोर्ट. ओके. वी हैव टू रिपोर्ट ऑल इनवर्ड रेमिटेंस टू आरबीआई थ्रू दिस ईडीपीएमएस सिस्टम. ओके. और जैसे ही वो एक्सपोर्ट करता है उस गुड्स को, देन द एडी कैटेगरी वन बैंक नीड्स टू रिपोर्ट द इलेक्ट्रॉनिक एफआईआरसी
to EDPMS where such FIRC are issue against inward remittance. तो उसे FIRC issue करना होगा. Okay. So the quarterly return being submitted for delay in utilization of advance received for export shall stand discontinued. So this quarterly return system is discontinued. Now it is real time basis. Real time में like आज आपने like you have received, customer has received payment and he has made the shipment and giving the document. So same day also we can issue the BRC. Like same day we'll process and next day it will be updated in the RBI. Okay, AD category bank can allow exporter having a minimum of 3 year satisfactory track record to receive long-term export advance up to tenure of 10 years. This point you can remember. Okay. अगर किसी एक्सपोर्टर का जो है एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है मिनिमम 3 ईयर का, तो वो लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट एडवांस भी ले सकते हैं अप टू 10 ईयर्स. उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं. ओके, सो मेनी कंडीशंस आर देयर. लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट विच इज इम्पोर्टेंट. ADF approval for trade fair or exhibition. So sometimes some trade fair and exhibitions are going abroad. So exporter want to go and show their demonstrate their products in the foreign country. So for that also they have to take ADF approval. Okay. So companies and other organizations participating in trade fair exhibition abroad can take or export goods for exhibition and sell outside India without the prior approval of the Reserve Bank. Unsold exhibit item may be sold outside the exhibition or trade fair in the same country. ओके, तो वहां पे भी अगर वो कुछ सैंपल लेके जाना चाहते हैं, दे हैव टू टेक द वेवर. ओके, एंड समटाइम दे आर सेलिंग दैट, देन दे हैव टू डिक्लेयर आफ्टर कमिंग बैक टू इंडिया. And there is no need of RBI permission in that. Okay, and the such sale at discounted value are also permissible. It would also be permissible to gift unsold goods up to 5,000 USD. तो अगर कुछ अनसोल्ड आइटम है वो एज ए गिफ्ट भी दे सकते हैं, बट उसकी पर एक्सपोर्टर जो लिमिट है दैट इज $5,000. ओके, सो नेक्स्ट इज EDF अप्रूवल फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर री इम्पोर्ट. सो like sometime here like AD category bank may consider request from exporter for granting EDF approval in cases where goods are being exported for re-import. Like कोई मशीन है, कोई टेस्टिंग के लिए अगर किसी को आउटसाइड भेजना है और वो फिर इसको री इम्पोर्ट कर लेगा, उस केस में भी बैंक्स जो है वो EDF अप्रूवल दे सकते हैं. ओके, री एक्सपोर्ट ऑफ अनसोल्ड रफ डायमंड फ्रॉम स्पेशल नोटिफाइड जोन ऑफ कस्टम विदाउट एक्सपोर्ट declaration form formality. So this is also allowed. Okay, foreign currency accounts of overseas branches, office representative of Indian entity. So at the time of setting up of office, AD category 1 bank may allow remittance toward initial expense up to 15% of annual sales income or turnover of last two financial year up to 25% of the net worth, whichever is हायर. सो फ्रॉम हियर यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन कि कोई भी अगर फॉरेन करेंसी अकाउंट जो है ओवरसीज ब्रांचेस या ऑफिस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन एंटिटी, ओके, वो अगर ओपन करना चाहते हैं तो उस केस में हम जो है अलाउ कर सकते हैं रेमिटेंस कितना इनिशियल एक्सपेंस के लिए 15% ऑफ एवरेज एनुअल सेल. ओके, और इनकम और टर्नओवर during the last two financial year or up to 25% of the net worth. For recurring expense, remittance up to 10% of average annual sale income of two financial year may be sent for the purpose of normal business operation of the office, trading or non-trading branch or representative office outside इंडिया. सो दिस यू कैन रिमेम्बर कि जो भी फॉरेन करेंसी अकाउंट अगर कोई भी इंडियन कंपनी फॉरेन में कर रही है तो उसके लिए ये जो है गाइडलाइंस है कि वो कितना फंड कर सकती हैं, रेमिटेंस कर सकती हैं. ओके, the overseas branch or office has been set up. Representative is posted overseas for conducting normal business activity of Indian entity. Okay, ये जो है guidelines है. B, the overseas branch or office shall not enter into any contract or agreement in contravention of the act, rules or regulation made thereunder. The overseas office branch representative should not create any financial liability, contingent or otherwise, for the head office in India, and also not invest surplus fund abroad without
प्रायर अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक। तो ये जो भी ऑफिस अगर आउटसाइड वो ओपन कर रहे हैं, तो वो कोई भी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज नहीं क्रिएट कर सकते हैं। ओके। और अगर उनके पास कुछ सरप्लस फंड है, तो वो उसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं वहां पे विदाउट आरबीआई अप्रूवल। एनी फंड रेंडर सरप्लस शुड बी रिपैट्रिएटेड। जो भी उनके पास सरप्लस फंड है वो उनको रिपैट्रिएट करना होगा। The detail of bank account open in overseas countries should be promptly reported to AD बैंक। तो जो भी अकाउंट वो ओपन कर रहे हैं वो उनको एडी बैंक को रिपोर्ट करना है। एडी कैटेगरी वन बैंक may allow remittance by the company incorporated in India having overseas offices within the above limit for initial and recurring expenses। ओके, तो वो यही वाली गाइडलाइंस है फ्रेंड्स, इस बेस पे वो सेंड कर सकते हैं आउटवर्ड रेमिटेंस with the above limit for initial and recurrent expenses to acquire immovable property outside India for its business and for residential purpose of its staff। तो वो immovable property को acquire कर सकते हैं। ओके, that is also allowed। The overseas office branch of software export company firm may repatriate to India 100% of the contract value of each off-site contract। ओके, तो 100% की जो वैल्यू है वो उसको वापस इंडिया भेज सकते हैं। इन केस ऑफ कंपनी टेकिंग अप ऑन साइट कॉन्ट्रैक्ट, दे शुड repatriate the profit of such on site contract after the completion of said contract। So these are the guidelines. Okay. An audited yearly statement is showing receipt under off-site and on-site contract undertaken by the overseas office. Expenses and repatriation thereon may be sent to AD category 1। Now, delay in submission of shipping documents by exporter। सो इन केस वेयर एक्सपोर्टर प्रेजेंट डॉक्यूमेंट, सो जो भी एक्सपोर्टर है उसे कितने दिन के अंदर डॉक्यूमेंट्स देने हैं फ्रेंड्स, दैट इज 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट। 21 days के अंदर उसे अपने डॉक्यूमेंट जो है बैंक में सबमिट करने हैं। ओके। एंड बैंक में हैंडल देम विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक प्रोवाइडेड दे आर सेटिस्फाइड विद द रीजन फॉर डिले। तो वो अगर 21 days में नहीं दे रहे हैं, अगर वो लेट हो गए, लाइक 21 days से वो 30 डे पे आ रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर, then also bank can accept, but the bank has to be satisfied with the reason for delay। वो रीजन से सेटिस्फाई होने चाहिए। ओके, मे बी ड्यू टू सम ऑपरेशनल एक्टिविटी और सम प्रॉब्लम मे बी देयर, फॉर दैट दे मे बी डिलेड। Return of document to exporter. The duplicate copy of EDF and shipping with document once submitted to the AD category 1 bank for negotiation collection should not ordinarily be returned to exporter except for rectification of error or resubmission। तो एक बार अगर एक्सपोर्टर आपको डॉक्यूमेंट दे रहा है तो वो बैंक को अपने पास रखने हैं, वो रिटर्न नहीं करने हैं, लाइक प्रोसेस हो जाने के बाद। Landlocked country. AD category 1 bank may deliver one negotiable copy of bill of lading to the master of carrying vessel or trade representative for exporter to certain landlocked countries if shipment is covered by irrevocable letter of credit। ओके, सो लैंडलॉक कंट्रीज के लिए ये स्पेशल केस है कि वहां पे जो है एक नेगोशिएबल कॉपी जो है बिल ऑफ लेडिंग की वो दे सकता है बैंक लैंडलॉक कंट्री के लिए। डायरेक्ट डिस्पैच ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय एक्सपोर्टर। तो फ्रेंड्स कभी ऐसा होता है कि कई एक्सपोर्टर जो है वो स्टेटस होल्डर हैं, तो उनके पास परमिशन है कि दैट दे कैन डायरेक्टली गिव द डॉक्यूमेंट्स टू द पार्टी और द बैंक। Okay, so here the bank should normally dispatch shipping document to overseas. However, they may dispatch shipping document direct to the consignee or their agent resident in the country or of final destination। So here are some guidelines. First is advance payment or irrevocable letter of credit has been received for the full value of export shipment and underlying sale contract। So letter of credit provide for dispatch of document direct to the consignee or his agent resident। अगर लेटर ऑफ क्रेडिट में ऐसा लिखा है तो जो बैंक है वो लेटर ऑफ क्रेडिट के डॉक्यूमेंट्स को भी डायरेक्टली उस इंपोर्टर को सेंड कर सकता है। ओके। द एडी कैटेगरी वन बैंक में ऑल्सो एक्सीड टू द request of exporter provided the exporter is regular customer and AD category bank is satisfied on the basis of track record of exporter and arrangement have been made for realization of export goods। So in cases में जो है डायरेक्टली भी बैंक जो है डॉक्यूमेंट्स दे सकता है, लाइक बैंक भी दे सकता है और कस्टमर भी दे सकता है। ओके, तो दैट सेम थिंग दे आर रिपीटिंग हियर। ओके। पार्ट ड्राइंग और अनड्रॉन बैलेंसेस। In certain line of export, it is practice to leave a small part of invoice value undrawn for payment after adjustment due to differences in weight
quality, etc., to be ascertained after arrival and inspection, weighment or analysis of goods. In such cases, AD category 1 bank may negotiate the bill provided. The amount of undrawn balance is considered normal in particular line of export trade subject to maximum 10%. तो फिर कई बार ऐसा होता है कि लाइक एक्सपोर्टर जो है उसने अपना जो बिल रेज किया है, उसने बिल रेज किया है $10,000 का। ओके, बट उसे जो पेमेंट मिल रही है वो है $9,500। सो इट इज मे बी लाइक ड्यू टू क्वालिटी इशू और समथिंग, सो देयर इज द अनड्रॉन बैलेंस। ओके, अनड्रॉन बैलेंस, तो अनड्रॉन बैलेंस को भी जो बैंक्स है वो कंसीडर कर सकते हैं, बट इट शुड बी कंसिडर नॉर्मल इन दैट लाइन ऑफ ट्रेड। उस टाइप के ट्रेड में वो नॉर्मल होना चाहिए। अदरवाइज द बैंक हैज टू क्वेश्चन द exporter. Okay, so undertaking is obtained from the exporter on duplicate EDF form that he will surrender or account for balance proceed within the prescribed period. तो suppose उसे $500 नहीं मिला, then he has to give the request for the write off of the amount which he has not received. Okay, so these are the some more things are given. Let's see next, consignment export. When goods have been exported on consignment basis, the bank, while forwarding shipping document to his overseas branch or correspondent, should instruct the latter to deliver them only against trust receipt or undertaking to deliver sale proceed by a specified date within the period prescribed. So this is for consignment export. Opening on hiring of warehouse abroad. So AD banks may consider the application received from exporter and grant permission for opening hiring warehouse abroad subject to following. तो ये जो है warehouse abroad अगर उन्हें open करना है तो these are the guidelines. Applicant export outstanding does not exceed 5% of export made during previous financial year. Okay, applicant has a minimum export turnover of $1 lakh during the last financial year. Period of realization should be as applicable, like 9 months. All transactions should be routed through the designated branch of the AD. The above permission may be granted to the exporter initially for a period of 1 year. Initially जो है बैंक को 1 year का permission देना है, okay, and renewal may be considered subject to applicant satisfying the requirement above. So bank grant such permission or approval should maintain a proper record of the approval granted. Okay, so export bill register, EBR. So banks should maintain export bill register in physical or electronic form aligned with EDPMS. The bill number should be given to all type of export transaction on a financial year basis, April to March, and same should be reported to ADPMS portal. फॉलो अप ऑफ ओवरड्यू बिल। तो फ्रेंड जब भी ओवरड्यू बिल हो जाता है लाइक 9 मंथ में पेमेंट नहीं आई है, देन द बैंक शुड क्लोजली वॉच रियलाइजेशन ऑफ बिल। तो वहां पे बैंक्स को जो है रियलाइजेशन ऑफ बिल के लिए फॉलो अप करना है। दे हैव टू सेंड अ लेटर टू द एक्सपोर्टर की पेमेंट क्यों नहीं आया, व्हाई इट इज नॉट डन, एंड इफ इट इज नॉट डन देन दे हैव टू राइट ऑफ द बिल्स। सो सेम थिंग्स आर given here. Reduction in invoice value on account of prepayment of usance bill. So occasionally exporter may approach AD category 1 bank for reduction in invoice value on account of cash discount to overseas buyer for prepayment of usance bill. So AD category bank may allow cash discount to the extent of amount proportionate interest on the unexpired period of usance. So reduction in value in other cases. If after a bill has been negotiated or sent for collection, its amount to be reduced for any reason. So AD category 1 bank may approve such reduction if they are satisfied with the genuineness. So reduction does not exceed 25% of invoice value. तो अगर कोई भी रिडक्शन होता है तो वो 25% की वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए. It does not relate to export commodity subject to floor price stipulation. The exporter is not on the exporter caution list of Reserve Bank. The exporter is advised to surrender the proportionate export incentive availed, because उसमें अगर उसे incentive मिल गया तो उसे वो surrender करना होगा. Okay, so 5% of average annual export realization होना चाहिए वो amount. Okay, change of buyer or consignee. So prior approval of Reserve Bank is not required. After goods have been shipped, they are to be transferred to a buyer other than the original in the event of default by the latter. अगर
सपोज शिपमेंट जो है वो कर दिया किसी कंपनी ने, और लेटर उनको पता चलता है कि ये कंपनी हमें पे नहीं करेगी, या कोई कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंजेस आ गए, तो उस केस में वो है वो उस शिपमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे बायर को। ओके, सो इन दैट, इफ एनी इन्वॉल्व डज नॉट एक्सीड 25% ऑफ इनवॉइस वैल्यू, अगर उसमें रिडक्शन है, अगर वो ट्रांसफर कर रहे हैं तो कोई रिडक्शन है क्योंकि उन्हें कुछ डिस्काउंट में बेचना पड़ेगा, सो इन दैट 20, जो वैल्यू है वो 25% से ज्यादा नहीं कम होनी चाहिए। ओके, एंड एक्सपोर्ट प्रोसीड इज नॉट डिले बियॉन्ड 9 मंथ, 9 मंथ के अंदर सेम रूल्स, पेमेंट आ जानी चाहिए। ओके, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बाय स्पेशल इकोनॉमिक जोन, so units in SEZ are permitted to undertake job work abroad and export goods from that country itself, subject to the condition that these are the condition. Processing manufacturing charges are suitably loaded in the export price and are borne by the ultimate buyer. Export has made satisfactory arrangement. Exporter has made satisfactory arrangement for realization. So these are the things that the people who are exporting in SEZ they have to follow. Extension of time. Suppose in 9 months the payment has not come, then the bank can give the extension. That extension will be for a period of 6 months at one time. And in that the condition again, okay, that export should not be under any investigation of ED, Central Bureau of Investigation, and the bank is satisfied. An exporter submit a declaration that export proceed will be realized during the extended period. So these guidelines to be followed. So many guidelines are there that you have to remember, because question will can come from any part of the guideline. Shipment lost in transit. अगर कोई shipment lost हो जाता है, then what will be done? So when shipment from India for which payment has not been received either by negotiation of bill under LC or otherwise are lost transit, the AD category 1 bank must ensure that insurance claim is made. उस केस में जो है बैंक को इंश्योरेंस क्लेम करना होगा. In case where the claim is payable abroad, the AD category bank must arrange to collect the full amount. तो उसमें भी AD category 1 बैंक को ही फॉलो करना होगा. ओके, एक्सपोर्ट क्लेम्स. Bank may remit export claim on application provided the relative export proceed have been realized and repatriated to India and the exporter is not on the caution list of RBI. In all such remittance, the exporter should be advised to surrender proportionate export incentive, if any, received by him. Write off. Now, this is the write off. This is very important. From here, question can be asked कि कितना राइट ऑफ कर सकते हैं. ओके, सो सेल्फ राइट ऑफ बाय द एक्सपोर्टर अदर देन स्टेटस. अगर वो स्टेटस होल्डर नहीं है, देन दैट दे कैन डू 5% राइट ऑफ टोटल एक्सपोर्ट प्रोसीड रिलाइज ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग calendar year in which the write off is being done. So this they have to see for the write off, self write off normal exporter, self write off by status holder exporter 10%, and write off by AD category 1 that is 10%. So in write-off, now these conditions are there that relevant amount has been remain outstanding for one more than 1 year. Satisfactory documentary evidence is there that payment is not realized. All efforts are done. Okay. An exporter is a regular customer of the bank for a period of at least 6 months and is fully compliant with KYC guideline. Okay. And the case fall under any of the undernoted category. So this main point you have to remember these 3 points plus this point. So write-off in case of payment of claim by ECGC and private insurance company regulated by IRDA. So bank shall on an application received from the exporter supported by documentary evidence from the ECGC and private insurance.
that the claim is in respect of the outstanding bill has been settled by them, write off the relative export bill in EDPMS. तो अगर फ्रेंड्स कोई क्लेम सेटलमेंट होता है तो उस केस में भी जो है राइट ऑफ करना होगा, जहाँ पे क्लेम जो अमाउंट है वो क्लेम के थ्रू है, नॉट फ्रॉम द प्रॉपर चैनल। ओके, एंड इन दैट ऑल्सो सच राइट ऑफ विल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू द लिमिट ऑफ 10% एज इंडिकेटेड बिलो। वो 10% से ज्यादा भी हो सकता है। ओके, सरेंडर ऑफ इंसेंटिव, अगर कोई भी इंसेंटिव जो है एक्सपोर्टर ने अगर लिया है तो वो उसे सरेंडर करना होगा। द क्लेम सेटल इन रूपी बाई ईसीजीसी एंड प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी रेगुलेटेड बाय आईआरडीए शुड नॉट बी कंस्ट्रूड एज एक्सपोर्ट रियलाइजेशन। तो जो भी क्लेम आया उसे हम एक्सपोर्ट रियलाइजेशन ही कहेंगे, वो एक तरह का क्या है, क्लेम है। सो दे हैव टू राइट ऑफ द बिल। सो नाउ राइट ऑफ रिलैक्सेशन। So there are some right of relaxation. So first is that right off on the basis of merit is allowed. Okay. Exporter proceeds certificate from foreign mission of India concerned about the fact that non-recovery of export proceed from the buyer. This would not be applicable in self-right law. तो यहाँ पे कुछ relaxations हैं. So again, friends, same, so many guidelines are there which are not that much important because this is the master circular. So step by step, all the rules are written. So we will discuss which is important as per exam point of view. Netting of export receivable against import. Unit in special economic zone. तो फ्रेंड नेटिंग ऑफ मीन्स कि एक्सपोर्ट कुछ अमाउंट का किया और इंपोर्ट किया, देन देर इज नो नीड ऑफ द पेमेंट एंड ऑल, सो दैट इज netting off. Exporter caution list. This is important. So exporter would be cautioned list by RBI based on the recommendation of AD bank concern, depending upon the exporter track record with the AD bank and investigative agency. तो फ्रेंड्स अगर कोई जो कस्टमर है वो एक्सपोर्ट कर रहा है बट उसका उससे पेमेंट नहीं मिल रहा है और वो डॉक्यूमेंट्स जो है शिपिंग बिल के डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं कर रहा है और जो भी वो एक्सपोर्ट कर रहा है उसे पेमेंट नहीं आ रहा, तो इन केसेस में हमें जो है बैंक्स को जो है एक्सपोर्टर को कॉशन लिस्ट करना है ताकि वो और एक्सपोर्ट ना कर सके। ओके, सो फॉर दैट बैंक हैज टू रिकमेंड, एडी बैंक हैज टू रिकमेंड टू रिजर्व बैंक, and after that the reserve bank will see all the documents and all the procedure, then it will be caution listed. Issuance of guarantees by an authorized dealer. So, authorized dealer may give guarantee in respect of any debt, obligation, or other liability incurred by a person resident in India and owned to a person resident outside India. So, bank can give the guarantee. So, there are also so many these some points are there, not that much important. Issuance of electronic बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। तो फ्रेंड जो भी है, लाइक वेन एवर वी आर लिंकिंग द एक्सपोर्ट, लाइक शिपिंग बिल को जब भी हम लिंक करते हैं इनवर्ड रेमिटेंस से, वेन एवर वी आर लिंकिंग, देन इट विल जनरेट द EBRC, इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, then only that shipment will be closed in RBI data. Okay, so AD category bank are required to update the EDPMS data of export proceed on as and when realized basis, and with effect from 16th October 2017, they are required to generate EBRC only from the data available in EDPMS to ensure consistency of data in EDPMS and consolidated EBRC. Remittance connected with export. Agency commission. So bank may allow payment of commission either by remittance or by deduction from invoice value on application submitted by the exporter. Okay, amount of commission has been declared on EDF soft text form and accepted by the custom authorities. So these are for that. Refund of export proceeds. So AD category one bank through whom the export proceed were originally realized may consider request for refund of export proceed of goods exported from India and being re-imported. तो कई बार जो है पुअर क्वालिटीज की वजह से या लाइक डील कैंसिल की वजह से दे आर सेंडिंग द गुड्स बैक, तो उस केस में जो है रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट को भी एक्सेप्ट करना होगा बैंक्स को। ओके, एंड दे आर परमिटेड टू डू, and these are the some rules that bank has to follow. Exercise due diligence, track record of exporter, verify the bona fides of the transaction, obtain from the export a certificate issued by DGFT, not insist on requirement of re-import. Okay, so first this is today we have completed
Okay, all which is important. This is the fourth part of the video. So if you have not watched our old videos, that you can just go through and watch the part one, two, three, and this is the fourth part of this export master direction on export of goods and services. So I hope so, friends, this is helpful. If you are watching this full video, I guarantee you that 10 to 15 marks you will be getting in certificate course in foreign exchange exam and international trade finance. Both will be giving you 10 to 15 marks if you remember all the things, whatever is mentioned in this master direction of Reserve Bank of India. So thank you, friends. Thanks for watching. I hope so. This full series of uh, export is helpful for you. Thank you, friends. Thanks for watching. Have a nice day.